Devika Jadhav, and second is Maureshita. Okay, so writing the two name here. Ignore the spelling mistake. Devika Jadhav. Okay. So I have taken some random data. Ignore the spelling mistake. I want to do कि जो ये format है, that will come into a small letter ABCD, second letter ABCD. So that is one formula in Excel, right? If you know, that is very good. If you don't know, what we have to do is equal to lower formula, tab, select the data and close the bracket. So जो data है वो small letter ABCD में आ जाएगा. It will come into second letter ABCD. Again same is equal to, sorry, lower formula, select the data and close the bracket. So it will come into second letter ABCD. Same if I will require the data into first letter, that is capital letter. So there is one formula is equal to upper, select the data and close the bracket, right? You can do the control D also, duplicate हो जाएगा. And third, if I need the data that first जो नाम है, that will जो भी नाम है, surname है, father name, husband name, जो भी data है, whatever data you have. So first letter capital and other data will into small letter ABCD. So there is one formula is equal to proper. Select the data and close the bracket. So नाम ऐसे आ जाएगा. So तीनों तीन format में we can change the data as we need. So this was lower, this was upper formula, and this was upper. There are three formulas in Excel. From lower formula, we can do the small letter ABCD. From upper formula, we can do the capital letter, and from proper, first letter capital, other data into small. Space के बाद again first letter capital, then other data will be into small letter ABCD. So whatever data you have, you can just translate into particular format. Okay, if you'll copy this data into any other part of Excel, right, वो copy नहीं होगा. Why? Because there is formula. So we have to remove the formula. So select the data, Control C, right click, simple, that is paste spatial, click on values and then OK. Now you can copy data to the anywhere. Okay. We have removed the formula from this particular database. Okay. Now there are many formulas. I have to name that ABC and DEF. Again, I have name like this. Right? I have employee name, their son name, their husband name, father name, whatever data, department name. Right? I have many database. I want to join the data into particular one cell. जो data है वो पूरा एक cell में आ जाए, नाम है वगैरह. So there is one formula in Excel. What is the formula? Is equal to Concatenate Formula. CONCATENATE. Right? Select the first data, जो पहले रखना है उसको पहले select करो, comma, select the second data. If any other data, you can comma and you can do continue. Otherwise, close the bracket. यहाँ पे data आ जाएगा. Again, I am repeating, is equal to Concatenate Formula. Select the data, comma, select the data and close the bracket. If you see, यहाँ पे space या कुछ ऐसा data नहीं है, नाम अलग करना है तो space चाहिए ना. So we have to add here inverted comma, space inverted comma, and again comma. Which में space चाहिए, so add inverted comma, space inverted comma. So now you will find the space. If you want to add full stop, so do inverted comma, dot, inverted comma complete and enter. Whatever data if you want to add this one. Okay. Comma.
this formula, that is concatenate formula. So you have many data. If you want to combine that data into particular cell, you can use this concatenate formula. Again, you have database into particular cell, that like यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, DEF है, just random data you have, and you want to separate that database. नाम वगैरह हमने join किया, right? If you want to separate particular data, so select the data, click on data tab, text to column, delimited by default. Next, demo classes लिए थोड़ा fast जा रहे हैं. Click on tab. कहाँ से आपको अलग करना है? तो स्पेस से अलग करना है. कोमा होता है तो कोमा से अलग कर सकते थे, सेमीकोलन है तो वहां से, बीच में कहीं डॉट है तो वहां से अलग करना हो तो यू कैन राइट इट. अभी स्पेस से अलग करना है तो स्पेस. नेक्स्ट, जनरल टैब में, मींस जनरल फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, आई वांट इन जनरल फॉर्मेट. क्लिक ऑन फिनिश. You can separate the data as well into Excel. We can combine the data into particular cell as well as we can separate the data into particular Excel. अगेन यहाँ पे कुछ और भी होता, 3 डेटा होते, 4 डेटा, तो भी वो चारों में अलग से सेपरेट हो जाते. न्यूमेरिकल वैल्यूज होती स्पेस के बाद, कोमा के बाद, तो यस वो भी सेपरेट हो जाते. ठीक है. देन many formulas, then we have countif formula to calculate the attendance of the particular employee, right? So what we will do, we will use the countif formula here, right? What you will do is equal to count if, select the whole attendance of particular employee, पूरे महीने की अटेंडेंस है वो 1 से लेके 30 या 31 तक की, कोमा व्हाट यू नीड प्रेजेंट, सो उसका शॉर्ट कोड क्या है, इन्वर्टेड कोमा p and inverted comma complete and close the bracket, is equal to count if bracket, select the whole attendance of particular employee for the whole month, whatever, comma you need present, so inverted comma short code, that is p, inverted comma complete and close the bracket. So you will find the present. If you want paid leave, again count if, select the data of particular employee, comma you need paid leave, so pl, inverted comma complete and close the bracket. So you will find the paid leave. So we will use count if to find the particular database from the whole database. उसके numerical values count करने total. So yes, count if is useful to find the database, right? Then shortcut है. If you want today's date, just press control semicolon. आज का डेटा आ जाएगा, right? And if you want time of now, just control shift and semicolon, right? So you will find the date and time. That is short code. You can do is equal to now also, you will find date and time both, or else is equal to today. By this short cut key वो वैसा का वैसा रहेगा, बट ये डेली चेंज होगा, so be aware. And last formula we have in this particular Excel, there are many formulas we will call into particular training. If you want to find out the particular duration between two dates, suppose I have 1st April 2005 and as of now it is 28 April 2022. I want to find out the number of years between two dates. So what is the formula? Is equal to dated if. Excel में नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा पूरा. Then bracket, select the first date, comma, select the last date, comma, what you need, number of years, so inverted comma y, inverted comma complete and close the bracket. You can find out the number of years. Okay, you need number of months, so write down the m. You need number of days between two dates,
So write down the D. Pick कब काम आएगा? So to find out the what you can say number of days for the bonus calculation, number of days for the leave eligibility, probation period calculation, then gratuity number of days, that is 240 days, right? There are many other calculations. So for that particular you can use this database, this formula. But yes, यहाँ से आपको बाकी लीव्स वगैरह माइनस करने पड़ेंगे बिकॉज इट विल गिव यू दी टोटल नंबर ऑफ डेज, उसमें से जो उनके LW वगैरह रहेंगे वो आपको माइनस करने पड़ेंगे. एंड आपको ऐसा डेटाबेस चाहिए नंबर ऑफ इयर्स, मंथ्स एंड डेज, सो यू कैन यूज दिस होल फॉर्मूला, right? In particular training I will cover this all points one by one. Okay, so I think I have covered 6-7 formulas here in particular sheet. In this sheet we have other left right database formula, average formula, count A, count blank, day to day, month, if formula for the PF calculation, for the ESI calculation, for the professional PT calculation we will use this formula, right? This whole formula for the PT calculation, that is for the professional tax जहाँ पे applicable है, for the PF अगर PF का limit 15,000 है, for the both अगर 15 से ऊपर salary है तो, for the ESI calculation we will use this if formula, and plus we can add the round formula as well. So पूरा training में I will cover that calculation part, minimum maximum formula, round formula, and dated if. Here around 20 formulas I have in particular this one sheet. Then again in sheet number 2 I have around 35-38 formulas. Right? From here bracket in formula, auto sum, clean, convert, exact date, right? Indirect formula we have IS blank formula, net working days, but again it will give you the total days from the that you can say international holidays, वही minus करेगा वो. Now replace formula I have Roman values, small substitute formula, sum is normal, sum is running total. See this is important one. I have total sales of 10, right? यहाँ पे 10 total आया, then I am adding 50, so यहाँ पे 60 आया, then in 60 I will add 30, then it will be 90, in 90 I will add 20, then it is 110. Generally admin profile के लिए or else for some calculation you can use this as running total formula. What you have to do, you have to just do this is equal to sum, you have to add dollar sign, and you have to select this particular first sales and then D8. Normal sum से एक step ऊपर you can say you have to add the dollar sign. I have given the example. जितनी भी Excel sheet है I will forward if you are joining the session. Then conditional formatting, yes it is important. Again for the you can say part of the attendance sheet. Suppose absent है यहाँ पे, ठीक है, और paid leave है, absent को मुझे रेड बना देना है. So what I will do, conditional formatting, I'll add the cell rules equal to, write down the A and select the custom format. Select the color whatever you want. I am selecting the red color for the attendance of absent. Okay and done. हो गया red. For the paid leave again conditional formatting यहाँ से भी कर सकते हो. Select the new rule, format only cells format only cells that contain, click equal to, you need paid leave color change, so select write down the PL format, what color you need, selecting the blue color. Okay and done. तो जितने भी सिलेक्ट किया होगा पूरा डेटा उसमें सब में PL में कलर हो जाएगा चेंज. Then data validation, right? If you want to create the what you can say drop down list, right? बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So what you can do,
we'll create the drop down list. Select the data, click on data tab, data validation, first option data validation, select the list, source code में जाओ and select the whole data. Okay, so we have drop down list, right? So we can create this. You can link this Excel sheet. I will click match. So वहाँ पे चले जाएंगे हम लोग सीधा Excel sheet को लिंक कर सकते हैं. Suppose I want to link this particular sum जो है उसको लिंक करना, तो यहाँ पे write down this sum. राइट क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करो, place in this document and select the sum and okay. So I will click here. वो मुझे sum पे लेके जाएगा. So पूरा डैशबोर्ड बनाना हो उस टाइम पे it will be helpful कि बहुत सारी एक्सेल शीट हो गई है. So if you want to link this Excel sheet, again यहाँ पे भी आता है, insert पे जाओगे ना, click on insert, एंड यहाँ पे भी लिंक आता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं. ठीक है. एंड फ्रीज पेन वट एवर, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पेन, टॉप रो, फर्स्ट कॉलम, टॉप रो करेंगे तो टॉप रो फ्रीज, राइट, अनफ्रीज. फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के बाद का जो रहेगा वो डेटा फ्रीज हो गया, फर्स्ट कॉलम वन, अनफ्रीज. बट मुझे ऐसा है कि मुझे यहाँ से डेटा फ्रीज करना है. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैलरी आई वांट टू फ्रीज द डेटा. सो व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पे कलर कर दो, एंड देन नाउ क्लिक ऑन फ्रीज पेन. तो यहाँ से डेटा आपका फ्रीज हो जाएगा. सी, यहाँ से आपको डेटा फ्रीज करना हो ना, जस्ट क्लिक देयर एंड उसमें ये येलो कलर कर दो, देन वो डेटा फ्रीज हो जाएगा वहां से. बाकी टॉप रो और टॉप कॉलम ही आपको फ्रीज करने देगा, ये डेटा जैसा है वहां से फ्रीज होगा. सपोज यू विल क्लिक दिस, तो आपका जो एग्जिट डेटा है उसके बाद का डेटा फ्रीज हो जाएगा, बट आपको जहाँ से करना होगा वो फ्रीज नहीं होगा, राइट. तो पहले 3 कॉलम आपको सिलेक्ट करके करने हो, तो यहाँ से यू कैन डू द कलर एंड यू कैन फ्रीज दैट पर्टिकुलर. ठीक है. पासवर्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं हम लोग. सो देयर आर अराउंड 35 फॉर्मूला हियर. I will cover this all formulas one by one. Okay, then I have one data. मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मुझे जो नाम है एंड लास्ट नेम है, ऐसा डेटा में मुझे सब डेटा चाहिए. सो व्हाट यू विल डू, concatenate formula से आप कर सकते हैं. आगे हमने देखा कि we'll use the concatenate formula and we can do, but there is one shortcut key. Just write down the first name in whatever format you want. Just click here and press Ctrl E. इसको हम लोग फ्लैश फिल बोलते हैं, राइट. जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट फॉर्मेट. आपको जो डेटा जो फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ पे, ऐसा जो चाहिए वो यहाँ पे लिख दो. मैन्युअली फर्स्ट टाइम यू हैव टू राइट एंड जस्ट क्लिक हियर एंड कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा अपने आप. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज फ्लैश फिल. देयर आर सम अदर एग्जांपल्स वी विल कवर इनटू पर्टिकुलर ट्रेनिंग. आपको नाम से कुछ अलग करना है, राइट. मुझे खाली लास्ट में जो डेटा है वही चाहिए, तो राइट डाउन दैट एंड जस्ट कंट्रोल ई. इट विल गिव यू द होल डेटाबेस, राइट. ओके, देन लास्ट 5 मिनट, हाउ टू क्रिएट द डैशबोर्ड. ये जस्ट एग्जांपल है, इससे भी काफ़ी चीज़ हम लोग डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हैं. वी कैन जस्ट सिलेक्ट ईयर, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप, राइट. यू कैन सी टोटल सैलरी भी चेंज हो जाएगा. यू कैन सी दी ग्राफ्स एज वेल. यहाँ पे जो भी आपको ग्राफ्स चार्ट्स आपको ऐड करने हो, यू कैन डू दिस.
whatever data you want, you have to add all the database. First of all, you have to make first data here. ऐसा पूरा data आपको बनाना है, right? Then you have to make the pivot table of all, and then one by one यहाँ पे पूरे steps मैंने दिए, प्रैक्टिकल में पूरा हम लोग step by step करेंगे उसको, and then we will create the dashboard. ठीक है? Just 1 minute. Okay, then you want to add some charts here. So जो भी डेटा है उसके हिसाब से if you want to add chart, insert में जा सकते हैं, recommended charts में हम लोग click on that particular recommended chart and you can add any one if you want, right? Headings delete कर देंगे. वो अपने आप अंदर ही आ जाएगा. So you can add this charts as well. ये पूरा हम लोग in that particular dashboard we will do this one by one, पूरा will cover. Others you can just press F11, वो आ जाएगा. Shortcut की है. You can change the charts here. You need this kind of chart. Okay. Right. You can change the colors as well, whatever color you want. There are many other formulas which will be helpful for all of us as an HR. Right. There is VLookup is there.